Okay, today lesson is some new terms are introduced. Let us understand. समझने की कोशिश करते हैं क्या है कैश डिस्काउंट. So due to increasing competition in the market, large number of transactions are involving credit on credit basis like credit sales and credit purchases. तो हमने उधार पे दिया या उधार पर लिया, दैट इज इट मीन्स. अब इसमें क्या होता है, जो डेटर्स है जिसने पैसे देने, जिसको हमने सामान बेचा है, ही पेज कैश आफ्टर सम टाइम टू क्रेडिटर. और क्रेडिटर को पैसे भी चाहते हैं बट इट टेक्स टाइम. तो वो क्या इंसेंटिव देता है, मोटिवेट करता है, कैश डिस्काउंट्स आर ऑफर्ड फॉर बिफोर टाइम पेमेंट. अगर आप उसकी पेमेंट को पहले कर दोगे तो आपको कैश डिस्काउंट दे देगा. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट. फॉर एग्जाम्पल, a cash discount should be a reduction of to an expense. After all, accountants define cost as the cash amount or cash equivalent amount at the time of the transaction. Let us explain this fact in more detail. The company receives marketing consultant services और कंसल्टिंग सर्विसेज, एंड उसने बिल किया 10,000 रुपये और ये कहा कि 1/10 नेट 30 डेज, अगर आप 10 दिन के अंदर दे देंगे 30 रुपये डिस्काउंट. इफ द बिल इज पेड विद इन 10 डेज देन द कॉस्ट विल बी 9,900 रुपीज. There is 1% discount. This means that cash should be credited 9,900 and that the marketing consulting expense should be debited 9,900. The cost of the marketing services was the cash price. It would be wrong to record 10,000 as marketing consultant expenses and record 100 as cash discount. The reason is that the cash discount is usually intended to be a contra account for purchases which is used by company for the purchase of goods for resale. तो जो आपने कैश डिस्काउंट दिया तो वही आप उसका प्राइस मानेंगे अपनी सर्विस का या गुड्स का, और वही आप बुकों में शो करेंगे. दैट इज द कैश डिस्काउंट. अब आ जाइए, अनदर टर्म इज ए ट्रेड डिस्काउंट. A trade discount is the reduction
to the printed price, that is MRP of a product, to increase the sale. For example, if you buy high volume, you may get 40% trade discount. If you buy a medium one, 30% discount, or if you buy normal, that is like a retail customer, then you don't get any price, any discount. इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, सेल्स काउंटर लगते हैं, डिस्काउंट सेल्स काउंटर वेरी ऑफनली ऑन फेस्टिवल सीजन, say 20% discount on so and so. So 20% is a trade discount on 100 rupees. ये चार से क्लियर है, तो ट्रेड डिस्काउंट का तो रिकॉर्ड होगा। तो देखिए, बेसिस फॉर कंपैरिजन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, मीनिंग क्या है? ए ट्रेड डिस्काउंट गिवन बाय द सेलर टू द बायर एज ए डिडक्शन in the list price of the commodity is a trade discount. अब हम कैश डिस्काउंट की बात करते हैं। कैश डिस्काउंट इज ए डिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ द इनवॉइस अलाउड बाय द सेलर टू द बायर इन रिटर्न फॉर इमीडिएट पेमेंट इन कैश डिस्काउंट। पर्पज टू फैसिलिटेट द बल्क सेल्स, सेल्स बढ़े, टू फैसिलिटेट द प्रॉम्प्ट पेमेंट, पेमेंट जल्दी आए कैश डिस्काउंट से। Invoice, it is shown in invoice as a deduction, जो भी आपने ट्रेड डिस्काउंट दिया, it is not shown in the invoice. When allowed, at the time of purchase, ट्रेड डिस्काउंट कब होता है? at the time of purchase. कैश डिस्काउंट कब होगा? at the time of payment. Allowed to all customer, ट्रेड डिस्काउंट, yes, but no, उसका टाइमली पेमेंट आ रहा है उसको तो नहीं है। एंट्री इन बुक्स, नो, एंट्री इन बुक, यस। सो ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री होगी और कैश डिस्काउंट नहीं होगी। जो ट्रेड डिस्काउंट है vary with time period when payment is made, quantity of goods purchased or amount of purchase made. Let us make it very clear. Trade discount, so we can say Control X, we should cut it. So trade discount at the time of purchase और कैश डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ पेमेंट, दोनों चीज़ें क्लियर होगी हमको। आई एम सॉरी फॉर लिटिल बिट डिस्टर्बेंस। अब हम बात करते हैं चेक ऑनर्ड और चेक डिसऑनर्ड क्या होते हैं। A check is said to be honored if the bank gives the amount to the payee. आपने बैंक में चेक जमा किया, वो कैश हो गया, that is honored.
बट अगर वो बैंक ने पैसा नहीं दिया तो दैट इज डिसऑनर्ड. Why? If the bank refuses to pay the amount to the payee, the check is said to be dishonored. In other words, dishonor of check is a condition in which bank refuses to pay the amount of check to the payee. कुछ न कुछ रीजन है तो बैंक नहीं दे रहा है, कैश नहीं दे रहा है उसको, एंड कैश नहीं हो रहा. उसके रीजन है, सम रीजंस फॉर इनसफिशिएंट फंड्स. अब इनसफिशिएंट, कभी कभी आपकी सैलरी आती लेट होगी, फंड्स इनसफिशिएंट होगी, कुड बी द रीजन. जो सिग्नेचर है वो मैच नहीं कर रहे हैं, इरेगुलर है, कहीं कटिंग हो गई या अल्टरेशन हो गए, बैंक रिफ्यूजेस टू पे. जब भी चेक डिसऑनर होगा तो बैंक उस पर नोटिंग देगा. नोटिंग मीन्स रिकॉर्ड करेगा और उसका वो चार्ज करता है. उसको वो बाकायदा मैसेज सील वील लगा के भेजेगा बैंक. ये दैट इज कॉल्ड नोटिंग. अब एक टर्म आता है पैटी कैश. So petty cash is the small amount of a cash that is kept on hand by the accountant to pay for minor or inexpensive purchases during the normal course of operation, like postage, small office supplies or any other purchases. वो हम बार बार उसको नहीं लिखते, पैटी कैश में दे देते हैं, फिर उसको एंट्री कर देते हैं जब वो चीज़ें अफेक्ट हो जाती हैं. फाइन. नाउ कम्स टू द ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेड अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट. अब देखिए ट्रेडिंग अकाउंट क्या है. It is a summary form of all the transactions occurring throughout the trading period in which the business deals. Basically, it gives the gross profit or gross loss because it refers to buying and selling of goods. So what we get here, the difference between the selling price and the cost price, and that reflects the gross profit or gross loss. ये स्पेसिमेन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट दिखाया गया है. डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक, परचेज, रिटर्न आउटवर्ड्स, परचेज रिटर्न, वेजेस जो डायरेक्टली कंसर्न है, फ्रेड, कैरेज इनवर्ड के क्लियरिंग चार्जेस, देयर आर एक्सपेंसेस डन ऑन दैट ग्रॉस प्रॉफिट. और क्रेडिट साइड में सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक, and that is how you prepare your trading account. Now you balance it. Balancing of trading account, both side debit and credit should be equal. The difference between the two sides of the trading account indicate either the gross profit or gross loss. If the total on the credit side is more, the difference represents profit, gross profit. If the total of the debit side is high, it represents the gross loss.
and that is why we call it a gross profit or gross loss, and that is transferred to the profit and loss account. Closing entries of trading account. Trading account is a ledger account, hence no direct entry should be made in the trading account. Several items such as purchases, sales, first recorded in the journal, then posted to ledger. And some accounts are closed by transferring them to trading account. Hence they are called closing entries. Advantage of trading accounts. The result of purchases and sales can be clearly ascertained. Gross profit ratio to sales could be easily ascertained. Gross profit ratio to direct expenses could easily be found out, and so on. Unnecessary could be eliminated. Comparison of trading account details with previous year. It helps us to draw the better policy administrative policy. After trading account, gross profit and gross loss account, we create the profit and loss account. The trading account reveals gross profit or gross loss. Gross profit is transferred to credit side of the profit and loss account. Gross loss is transferred to debit side of the profit and loss account. Thus, profit and loss account is commenced. The profit and loss account reveals net profit or net loss given at a time of accounting period. Now, items appearing on the debit side of the profit and loss account में क्या आते हैं? The expenses incurred in a business is divided into two parts. One is the direct expenses, which are directly incurred on the product, which are recorded in the trading account. Another is indirect expenses, which are recorded on the debit side of the profit and loss account. Indirect expenses are like selling expenses, office expenses, maintenance expenses, financial expenses, which we have mentioned. Items appearing on the credit side of profit and loss account. Gross profit appeared on the credit side of the profit and loss account. Also, gains of the business are also typical. Such gains are items such as interest received, rent received, commission earned, and so on. So, profit and loss account example. Debit side, salaries, office expenses, stationery, printing expenses, insurance, tax, discount allowed, traveling expenses, advertisement, net profit. On the credit side, gross profit, and discount received. Now we prepare the balance sheet. Trading account provides the details of gross profit, or gross loss. Profit and loss account provides the details of net profit or net loss. In addition to that, we want to know the total asset invested in the business, position of the owner's equity, and liabilities of the business. That is what balance sheet is required. The balance sheet is a statement which sets out the asset and liability of a business firm.
which serves to ascertain the financial position of the same at any particular date. Left side of the balance sheet is liabilities and capital. Right side of the balance sheet is the assets. Both sides should balance, must be equal. Capitalized asset exceeds the liability. अगर asset naturally more है than the liability, that is the capital arise. Objectives of the balance sheet. It shows accurate financial position of a firm. Various transactions took place at a given period. It also indicates whether the firm has a sufficient asset to repay the liability. Accuracy of the final account verified by the statement. Profit and loss arrived through the profit and loss account statement. So now this is the specimen of balance sheet. Liabilities and asset. Liabilities capitals are on left side, assets are on right side. Like liabilities, bills payable, sundry creditors, bank overdraft, loans, mortgage, reserve fund, and so on. So capital, net loss, drawings, income tax, and what we have here total. Assets, cash in hand, because first liquidity. The word liquidity को हमें समझना है, जो easily कैश में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज द लिक्विडिटी. तो कैश तो है ही लिक्विडिटी. कैश एट बैंक, वो भी लिक्विडिटी, इजिली इट कैन बी कन्वर्ट. बिल्स रिसीवेबल, दे आर द नेक्स्ट वन. सन्ड्री डेटर्स, जिनसे पैसे आने हैं. क्लोजिंग स्टॉक, फर्नीचर, फिटिंग्स, प्लांट एंड मशीनरी, ये हमारे एसेट्स हैं जिनसे लॉन्ग टर्म में बेनिफिट ड्राइव्स करते हैं. एंड ऑल दीज थिंग्स, एंड इनका टोटल होगा. दैट इज व्हाट इज योर balance sheet. And thank you for this today. Then tomorrow we will discuss further. Have a good day.